Everyone. We were just at peace. We were just quietly soaking in such amazing views, such amazing energy, air. I think to three of us when we'll go to the southern islands, it'll be amazing as well. But I must mention the hot springs also. It was raining that day, and when we entered that place, it was like we were walking through the clouds. You will see it in some of the glimpses, but even that was so surreal. It was breathtaking almost. Thank you so much. So, New Zealand, we Your all know name, is. Hi, I'm Sharanya. I'm so sorry. I'm Sharanya. I travel Hi. for a living, and New Zealand for me is obviously the biggest draw. Is this adventure capital of the world? Like, there's everything you name it. It was discovered and made in New Zealand. Bungee jumping, skydiving, all of that. Are you guys daredevils? Did you do any of that? Would you like your child do that someday? No, for sure. This time I chose not to do it, but it is in our bucket list. So I was like, Raj, I'm not going to bungee jump or skydive. जैसे हमने वेटा वर्कशॉप ऑफर which is there only, that is an experience you must go and have. Then थोड़ा और आगे जाओ तो everything about New Zealand, मतलब those mountains, those hilly mountains, that chopper ride that we did, to experience the forest, everything, the rivers from up top was again very magical. So I think जितनी भी चीज़ें हमने वहाँ पे की वो सभी बहुत यादगार है हमारे लिए, और for sure हम दोबारा जाना चाहेंगे. Yeah, well, I want to mention the carvings on the mountain. And that was a beautiful experience. We had taken a boat and we had gone and seen it. And there were little elements in the carvings that said so much about their culture and why they made it. And it has a whole history to it. So, I mean, now that I look back and I was watching, sorry, the video, there were so many memories and I just kept smiling looking at them because we really did have a good time. And meeting the Maori tribe, at the Haka shop, it was just the dance that they did for us, their traditional dance. It was just breathtaking, the way they performed, the way they, embraced us. They made us a part of their own family. They cooked for us. It was so welcoming to experience that as well. We take one last question from the media. Hi, Rajan Kaushal, this is Kabir here from the Fitness Journal. First of all, of course, congratulations. Thank you so much. Secondly, the whole walk ride experience. Now, of course, it's taken in a different context, but it originated as a walk ride. Had you ever Thank you. बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देश है, बहुत ही नेचर के करीब है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड हैं, कंपैशनेट हैं, और जिस तरह से अपने नेचर को, अपने सब कुछ, अपने रिवर्स को, माउंटेन्स को, हर बीइंग को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, आई थिंक उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मुझे वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे. वहाँ के जो फॉरेस्ट है, सेंचुरी माउंटेन स्पेशली, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मतलब ऐसे जेन कर देने वाली वाइब थी. तो मैं तो बिल्कुल ज़रूर जाऊँगी न्यूजीलैंड. बिल्कुल, आप लोगों तो पावर कपल है ये, बट इंडस्ट्री में से किसी पावर कपल को आप लोगों को रिकमेंड करना हो न्यूजीलैंड जाके टाइम और इस जगह को एक्सप्लोर करने का, तो कौन होगा? ओह, किसको रिकमेंड? आई थिंक हम सबको रिकमेंड करेंगे. I mean somebody who is very adventurous. Yeah. I don't know, I think Siddharth and Kiara are very adventurous. Yeah, Siddharth and Kiara. Yeah. ये एक सरप्राइज आप लोगों ने और दिया है गुड न्यूज़ के तौर पे. आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो आगे बीइंग अ पेरेंट्स? ऑफ कोर्स बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है, एक नई चैप्टर की, कि 15 साल से हम एक साथ हैं, तो अभी ये नेक्स्ट बहुत ही नेचुरल प्रोग्रेशन था, तो वी आर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एक सवाल लास्टली कि अपने पेरेंट्स से आप लोगों ने जो सीखा है और एज अ पेरेंट्स आप लोग अपने बच्चों को जो सिखाना, कोई एक चीज़ अगर बताना हो? वो तो पता नहीं, टाइम विल बी द, आई डोंट नो, यू से. ऑफ कोर्स हमने कोशिश करते हैं कि हमने जो अपने पेरेंट्स से सीखा है वो अपने बच्चों में भी इंस्टिल करें. इससे आई थिंक हम दोनों ही बहुत इंडिपेंडेंट हैं, हार्ड वर्किंग, हम मेहनत में विश्वास रखते हैं, ऑनेस्टी में एंड कंपैशन में, तो हम कोशिश करेंगे कि यही
अपने बच्चे को भी दें. Anything for your lovely audience and fan? Please watch Malik. It's releasing tomorrow, and please visit New Zealand. Yeah, thank you. Thank you. Okay, thank you.